Great Himalayan Exploration, what we're doing is capturing the intangible cultural heritage that people in Ladakh are actually following. The Great Himalayan Exploration allows us time, and time is crucial to connect and to understand the culture of the practices. Intangible cultural heritages, even if it does not exist, let's say 1,000 years from now, it's going to be documented where you know that this was something there. Well, UNESCO's been working for a long time now on intangible cultural heritage. Really, the key element to safeguarding all of this heritage is that the next generation continues practicing it. So this kind of partnership, in this case with Royal Enfield, is a great way for us to raise the visibility, to raise the awareness among the large population. This intangible heritage or living heritage is around us. There might be different types of documentation. There can be recordings, there can be photographs, notes, transcriptions. So the message I'd have for the writer researchers is, first of all, you're about to embark on a fantastic journey, and you're very lucky. Not only, of course, just riding around the Himalayas, which is in itself an amazing experience, but the opportunity you have to dig deeper and to engage with the communities who live there and to be exposed to the richness of their cultural heritage. That's a great opportunity you have. Intangible cultural heritage is perhaps the core of the reason we travel. When you visit the Himalayas, don't leave anything except for your footprints, and don't take anything except for memories. So the route for Ride 1 is started in Leh. From there we went to this small hamlet in Likir. From there we will ride down to Kargil. From there we will ride down to Garkon. It's a very scenic route. I am Rishmita Naidu Kakal. I love traveling with my partner actually. He is one of that person I think I can be myself. My name is Hassan. When I'm on the bike, I just feel like I'm with myself. My name is Gautam Prasad. Hi, I'm Samrat. What brings me to join this third edition of Great Himalayan Expedition? I get to explore the culture a little deeper than one would do just traveling by themselves. That's why I'm here. I am Anurag Chauhan. I believe that this is going to give me an opportunity to go deep inside the territories. We live with the people. I'm born and raised in Mumbai. When I came in with a very different perspective altogether because I knew that I was not going to go to those standard places. Hi, my name is Abhishek. So my name is Clifton Chipway, and I'm a photographer and content creator based here in India for the last 22 years. It's imperative that I pick up the local language. तो मैंने बहुत कोशिश किया हिंदी सीखने के लिए. अभी तक तो सीख रहा हूँ, मेरा vocabulary तो इतना strong नहीं है.
first day of the trip, and then we reached Hemis Monastery, which is encircled by mountains from literally all the three sides. Folks, we've just been told only 4 of us can go in. So who hasn't been? Who wants to go? What we have? Drama. Okay, between husband and wife. Get some pictures after before. When I entered the Hemis monastery, there was this splur of happiness inside me. It was actually a beautiful experience having so many people wanting so much of positive energy in the same room for same intentions, for the same things that we all are doing. How was it? It was amazing. Shanti. Relaxing and something that you don't get to experience. It's brilliant vibrations and you almost kind of feel goosebumps when you're just sitting there, and it's an amazing feeling. Yeah. But we prayed for you guys. Oh, thank you. Yeah. Chale? Yes. Here we are in Ladakh, so beautiful, so massive. You're having this ego of who you are, but this kind of spaces when you travel, you realize you're actually a really little part of this world. As we entered through the gates of Likir village, the immediate standout was the monastery. It just was there like a crowning jewel over the town. Arriving at the potter's house, saw the beautiful stone whitewashed walls and brown wooden frames of the windows and the doors, and they were sort of this testament to the beautiful simplicity of the family. इन्होंने ना जब बचपन में मेरा दादाजी मतलब कम उम्र में गुजर गया, तो घर में कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से कोई कमाए, तो इनको बोला कि तो आप ऐसा करो, दूसरे काम आप क्या करेंगे, जैसे लिकिर का जो मेन जो काम पोट्री है उसी को आप स्टार्ट करो। झूले 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 जी झूले आइए जी। आप कब से कर रहे हैं ये जो पॉटरी का? मैं जब शुरू कर रहा था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं 4-5 और मेरा फादर वही लोग कर रहे थे, बाकी पोट्री करने वाला नहीं था। उनका एज हो गया तो वो लोग नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेरा फादर था यंग में। ये जो पोट्री है ना, इसमें तो बहुत सारे मेहनत है। फिर इसमें ना ऐसा है ना कि मिट्टी कलेक्ट करके उसको क्रैश करके फिर उसका क्ले बनाओ खुद, फिर उसके बाद फिर पॉट्स बनाओ, फिर उसके बाद फिर उसको सुखा के फिर पूरा शुरू से लेके एंड तक हमें करना था। पहले लिकिर जो विलेज है ना, पूरा पॉटर विलेज के नाम से जाना जाता है। तो पहले ज़माने में जब राजा का रूल था, तो राजा ने ना अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया हुआ था। तो लिकिर विलेज को पॉटरी का काम दिया था, तो नेक्स्ट विलेज किसी को कावरंग कलेक्ट करने के लिए, किसी को ग्रास कलेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो दादाजी लोग का कहना है कि ये जो पॉटरी का जो टेक्निक है तिब्बत से आया है। तो लिकिर वाला जो है ना जो विलेज, उनको ये पूरा टेक्निक सीख गया, तो उन्होंने पूरा इसको कंटिन्यू रखा। I feel we now have a sense of responsibility to ensure that it goes on. पहले बीच में तो हम दो ही थे कि बनाने वाला, फिर ऐसा था कि कोई आगे आएगा नहीं आएगा। अभी ये सब वर्कशॉप्स हुआ, तभी हम लोगों को सिखाया, अभी लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम में बच्चे लोग भी करेगा। वो लोग काफ़ी मतलब एक्साइट होता है कि हाँ ऐसा कि लद्दाख में भी ऐसा कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। Rickson has done such a good job that he's been covered a lot in media. So I asked him, do you think people will take up? And he's very confident. And I'm quite confident they are not the last potters of Likir. आप हमें तो प्रोसेस स्टार्टिंग से ही समझा सकते हैं। ये जो है ना यहाँ का व्हील है, इसको हम स्कोर बोलते हैं। ये वाला जो चीज़ है इसको हम पो बोलते हैं। जब ये पो जो है यहाँ पे रखते हैं ना, तो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, तो मूव नहीं होता है।
कोई कट करने के लिए उसको हम चचिंग बोलते हैं, कोई होल करने के लिए उसको हम पुर्चा बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग जो टूल्स हैं, जैसे ये बना रहे हैं ना, हम ये यूज़ करते हैं, ये जो पाम है ना इसका फीलिंग यूज़ करते हैं, कितना गीला है, कितना टाइट है, कितना प्रेस करना है। ऐसे पूरा सेंटर से लेके साइड धीरे धीरे बीट करना है, एक हाथ से इसको व्हील को घुमा के फिर ऐसे बीट करना है। अभी ये वाला जो पार्ट है ना, डोनट जैसा बनाना है, ऐसे राउंड ऐसा दोनों साइड से मतलब प्रेस करना है, ताकि क्ले का जो शेप है ना वो हर साइड से इक्वल हो। अब इसको यहाँ रख के फिर इसको सेंटर चेक करना है, स्टिक करने के बाद फिर ऐसे ये हाथ अंदर रख के ऐसे थंब से ना ऊपर की तरफ प्रेस कर। Both his hands are moving absolutely in sync. We see the end product and we are like, okay, fine, it's just a pot. But when you actually sit and understand the entire process, you kind of start understanding of the effort, the time, the energy that has gone into making this. हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया। आप लोग को करना है? हाँ हाँ, इसको ट्राई करेंगे। तो मैं आपको मिट्टी दे देता हूँ। I was really bad at it. I couldn't even make a small artifact out of the clay. तो भैया आपका शादी हो गया नहीं हुआ? अभी नहीं। नहीं हुआ? अभी नहीं। अच्छा। So cute. बहुत जल्दी बच्चे निकाल रहे हैं ना, क्योंकि उनको भी सिखाना है। ठीक है। नहीं तो मैं अपना लड़का को भेजूंगा सीखने के लिए। हाँ ठीक है। ट्रेडिशनल वे में जैसे हम फायरिंग करते हैं, पत्थर साइड से पत्थर से हम इसको कवर करते हैं, फिर उसके पत्थर के अंदर उस पांग को साइड से पूरा रखते हैं, फिर उसमें हम कावडंग को ऐसे तोड़ के ना उसको एक ही साइज़ में जैसे तोड़ के पूरा एक लेयर बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर हम पोट्स रखते हैं, पोट्स को फिर इसको फिर कावडंग से कवर करते हैं। फायरिंग करते हैं शाम को, ताकि शाम को ना थोड़ा हवा अच्छे आए। It was a powerful moment for each of us to be able to sit there in the presence of the last potter of Likir and see this ancient craft that's potentially at risk of disappearing forever. Shall we go? Thank you. Now the sun is out and we're really excited to go back and see what happened to the pieces that we put into fire last evening. अभी तो गर्म नहीं है, पहले साइड से ये पत्थर हटाना। There we go, that's the complete process. We've seen it right from the mountain to the fire and out of the fire, right? That's pretty amazing. Shall we have a group photo? Yes, yes, do that. please. Yep. Perfect. All right, everybody look this way. Say Jule. Jule. झूले झूले। Thank you so much, यहाँ uncle. झूले 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 बहुत अच्छा लगा मिलकर। सबको झूले। So post Likki, then we went to Kargil, as the next destination was Hadras. Between Kargil and Hardas is a big, beautiful wooden bridge. And as we crossed that bridge, it kind of felt like we were crossing into a different period of time. We're driving through the village, we could hear some beautiful music being played, which made us stop. In my head, ghazal always has a very specific tone, but when I heard it for the first time, it didn't feel like the ghazal that I have been listening to.
बल्ती म्यूज़िक जो है ये बहुत पुराने ज़माने से, यानी आज से 600, 700, 800, 1000 साल से ये चलता आया है। अब्बास जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपके ये रिहर्सल में शामिल करने के लिए। जब हम आए तो सुन के तो एकदम। अब्बास जी, बाहर से आपका गाने का आवाज़ तो हवा में चल रहे थे। वेडिंग सेरेमनी है, अच्छा, उसके लिए अच्छा, बस उसी का तैयारी चल रहा है। तो बल्ती लैंग्वेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि इस लैंग्वेज को बचा के रखें, इस म्यूज़िक को बचा के रखें। Abbas sir is the reason. He's the catalyst that has caught these kids' heart. We saw that in him. We saw that as we interacted with him and heard about the struggles that he faces. जी, इसमें हमारे बल्ती में जो है ना वो 3 किस्म का वेरिएशन होता है। एक तो बिल्कुल स्लो होगा, उसे हम लोकगीत ही कहते हैं, तो उसमें एक कहानी छुपा होता है। They had songs for everything. They had songs for love, they had songs for marriage, they had songs for longing, for bravery, for everything that was there. उसके बाद दीवान कहा जाता है। दीवान में थोड़ा सा मीडियम फास्ट होता है, उसमें हम थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद जो गज़ल का जो मेन जो रक्स होता है, रक्स जिसमें नाच होता है, उसमें हम जोशीला हम गाते हैं। The feeling of the music in Hadras was totally like eclectic. I could literally feel the goosebumps. It was like a sound therapy kind of session for me. Musically, it's really enchanting. And after the alap and the middle stage, it automatically goes into an up-tempo sort of space where you end up dancing. You know, it sort of begs you to move your body and clap and rhythm, and eventually somebody stands up and starts dancing. One of the beautiful things about music is it transcends language. When we sat there in the room listening to these amazing young youths singing from the bottoms of their hearts, I was filled with a flood of emotion, and I'm not ashamed to say I cried. इतनी इमोशन है, ये है, बहुत है, मेरे आंसू निकल रहे हैं। कल सर हम पूरा कल्चरल ड्रेस में होगा, कस्ट्यूम में होंगे, ज्वेलरी पहन के होंगे। आप वहाँ की एंजॉय कीजिए सर। आज का प्रैक्टिस देख के तो शायद आप हमें तो रोक भी नहीं सकते हैं। We were invited at the wedding at Hadras. I really felt like, like we were not somebody who was just an outsider over there. This wedding was so simple and so pure, and the music was all that was needed. The only decoration that wedding tent needed was the voices of those incredible people. I was very pepped up to go and dance. I was already in my mind made up that I want to dance. When I actually danced with him, we shared a brotherly moment. Despite the community, despite the language barrier, music connected us. Leaving Hardas and Kargil, we wound our way deeper into the Himalayas, headed towards the Aryan villages. हमारा आर्यन वैली 4 गांवों पे स्थित है। हम बिल्कुल लोअर इंडस के साथ साथ हमारा सारा गांव है। 3 भाई थे, ये कहना है हिस्ट्रिकली, और एक बहन थी। सबसे बड़ा भाई थोरसोलो जो हनु में था, सेकंड भाई सिंगिल सिंगे दा में था, तीसरा भाई नपा मोरो घरकुल में, और दार्चिक में उनकी एक बहन थी, हरी देव।
The intangible cultural heritage of the Garkon village that we were covering here was of the traditional attire. When we came to Garkon village and we went for the village walk with Tashi sir, I realized that how important they give to the nature itself. ये फ्लावर्स है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स मुंटूतो मॉइस्चर नहीं होगा तो 12 इयर्स एज इट इज है अच्छा ये स्पेशल है इसका 12 इयर्स We met some more ladies as well. There were like 4 ladies and there was one more gentleman as well. But not in your regular attire, but it was fully in the traditional attire. ये कहाँ से लाते हैं ये जो ये मेरा मामी का है आप अपने बेटी को हाँ वही The Aryans actually hand over the dress, so you get your dress from your mother and you are free to modify it how you want to. So every time the dress changes hands, there is an element of your mother or your grandmother in that dress. और इसको क्या बोलते हैं ये जो आप इसको हाँ नहीं ये जो ये ग्रास का इसको नांगछामो बोलता है जेंट्स का यही रहता है हमारा ये रहता है ये और टोपी रहता है पहले था कान में परंगा था झंझट है यहाँ मनका भी होता था अभी भी चूटी भी होता था They have a kurtini, which is like a tunic. Both the men and women have this. Slightly different. Women's are pullover and then men's are more wrap. हमारा अलग है ना 4 गांवों का अलग अच्छा गांव में अलग अलग है नहीं ये 4 गांवों का हाँ 4 गांव का अलग दर्चिक गरखो हानु का तो थोड़ा अलग है It was so unique in the way that the women braided their hair, the way that their jewelry didn't just adorn their necks, it adorned their entire being. इसको क्या कहते हैं टोपी को आपके खो We actually spent a lot of time with them understanding their attire, adorned with a lot of brass, small coins and badges and buttons and gungrus. फोटो खींची ठीक है हाँ बारी होना चाहिए चांदी उसमें मन का क्या क्या है फूल लेकिन खुद ही बनाते आप जो जिसको पहनना है वही खुद बनाए Banana festival is about celebrating and remembering their deities after the harvest. That's their way of thanksgiving. Banana festival है तो हमारा हिस्ट्री है उसमें कि हम कहाँ से आए थे क्या है और साथ में कहते हैं कि ये जो बनाना फेस्टिवल में 18 गाने होते हैं वो पूरा देवताओं का गाने हैं तो ये जब गाने हम गाना शुरू करते हैं वहाँ जो अखरोट का पेड़ है जो 3000 का कहते हैं कि उनका ब्रांचेस नीचे बेंड होते हैं ये एक इंडिकेट करता है कि वहाँ पर देवता लोग ये गाने सुनने आए हैं They took us to some folk songs where they talk about Rome and Macedonia and where all they came from. So it was a beautiful experience. So this Ladakh trip will stand apart from all the others. It's a dream come true. It's everything that a photographer and a storyteller could hope for out of a journey. And together you get to be a part of different cultures where you both take back different things and you share it with each other and it just makes you better. It's a journey which has evolved me a lot, not just in terms of the perspective of the place, but I also believe in terms of as an individual also. A personal journey for me, the journey to actually understand the culture, the heritage that we are not even aware of.
Every journey transforms you. This journey especially taught me, it reminded me how important identity is, and how important our practices are to our identity, and how important it is not to judge them, to see them for what they are, and accept them and make space for them.